Okay, hi everyone, welcome on board. Quick few announcements to be made. Number one, I have launched a special course for people who are really struggling with verbal ability. It's going to be 1 day workshop. Okay, it's going to be 1 day workshop where I'm going to revise everything when it comes to your reading comprehensions, para jumbles, summary based questions, and also the out of context questions or odd one out questions. This is specially for the people. In fact, I did a quick vote out on YouTube community, and people, there were 1,000+ votes to this, and we talking about sir verbal के अंदर पास कराओ, क्वांट्स दिया है हम संभाल लेंगे. So this is primarily for engineers who are really struggling with that, and couple of them are IITs, NITs. I stay next to IIT Bombay here in Powai, and a lot of people have been pinging me. So मैं आपको इनफैक्ट कुछ स्क्रीनशॉट्स भी दिखा दूंगा आपके, बट नेवरदलेस हम लोग पढ़ सकते हैं. तो ये वेंसडे को होने वाला है, और वेंसडे को आप लोग शाम को आएंगे, अबाउट रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक मेरे साथ टाइम स्पेंड करेंगे. वेयर विल रिवाइज एवरीथिंग. इट्स एन एक्सटेंडेड वर्जन एंड an encapsulation of verbal Wednesdays. Number one, what I'll also do is I'll also give access to the entire verbal Wednesday. Verbal Wednesday क्या होता है? रात को राहुल सर का लंगर लगता है और हर बुधवार को हम लोग पार्टी करते हैं. आई एम नॉट श्योर तुम लोगों ने अटेंड किया अभी तक. हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेंडेड द वर्बल वेंसडे? जस्ट से like I always ask in the webinar, been there, done that, BT, or is the first time, तो उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा. But yes, there's going to be small subscription fee for the same. आप कर सकते हो. Number one. Number two announcement. A lot of people are pinging me for some specific topics like sir algebra के 1000 क्वेश्चन दे दो, अरिथमेटिक के आपकी क्वेश्चंस बहुत बड़ी, तो उसका भी मैं आपको लिंक दूंगा. और दूसरी बात, पीपल हु गेट इन द कोर्स विद मी जस्ट फॉर अ डे, उनको मैं और भी दे दूंगा. वो हमारे कैट किंग स्टूडेंट्स के लिए है वैसे तो, पर आपके लिए भी एक्सेस दे देंगे. दैट इज मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे. अगले 10 दिन हम लोग एक एक टॉपिक रोज करने वाले हैं. आई रिपीट, अगले 10 दिन एक एक टॉपिक रोज करने वाले हैं विद कपल ऑफ पीपल फ्रॉम IIM. सुधांशु करके हैं हमारे IIM लखनऊ के, उनको बुलाएंगे. एंड सम अदर टॉप स्पीकर्स फ्रॉम निटी भी एक बॉम्बे के अंदर इंजीनियर्स के लिए फेवरेट कॉलेज है, उसको भी बुलाएंगे. तो बट अगर आप इस कोर्स के अंदर आ रहे हो तो पहली बात तो अपना वेंसडे को 2 घंटे फ्री रखिएगा, उसके अंदर मैं आपका वर्बल सॉर्ट करूंगा. और दूसरा, जो लोग फ्री हैं और जिन लोगों को क्वांट्स वगैरह, नॉन इंजीनियर्स के लिए भी कुछ है, नॉन इंजीनियर्स के जिनको क्वांट वगैरह सॉर्ट करना है, और आप ये सारे के सारे 12 दोगे, उसका शेड्यूल मैं नीचे आपको पोस्ट कर रहा हूँ, और वो सेशंस फ्री रहेंगे इफ़ यू गेट टू द एक्सेस टू द वर्बल वेंसडे. तो और एक और बात, सिर्फ इंजीनियर्स को ही वर्बल पे ध्यान नहीं देना है, नॉन इंजीनियर्स अगर आप कैट क्रैक करना चाहते हो, I've seen lot of people making it to IIM A, B, C, I, L, K, what I call it the beautiful blackie IIMs. They have aced through verbal ability, और quants DILR में वो लोग पास ही हुए हैं. They've just got about 80 percentile or 85 percentile to be more precise, and they have made it to IIMs. So 8 क्वेश्चन तुम्हारे DILR में ठीक हो गए, और 8 से 10 क्वेश्चन तुम्हारे अगर क्वांट के अंदर ठीक हो गए, और वर्बल के अंदर तुमने 26 क्वेश्चन ठीक कर लिए, तो भैया लाइफ इज गोना बी सॉर्टेड. सो आई एम द ओनली फैकल्टी इन इंडिया who's going to be telling you verbal में ध्यान दो अगले 10 दिन, life is going to be sorted. And promise me guys, people think verbal is easy. Verbal is definitely easy once you know a hack of it. Easy का मतलब ये नहीं कि यार मैंने 15 क्वेश्चन ठीक किए 34 में से. easy का नंबर है 25 क्वेश्चन ठीक करो 34 में से. 26 क्वेश्चन ठीक हो गए, you're going to get 99.99. How Neha is a non-engineer 2 years back, and then she got IIM Ahmedabad call, and she got 99.97 या 98 at 26 questions right. समझ आ रहा है? So I'm going to see you online, and all the best. Take care. Bye-bye. Wednesdays 9 p.m. I'm going to be seeing you. I'm giving you the link of the course as well. Do attend, and you'll remember me. That's my promise. Thank you so much. Bye.